A very good morning to all of you. So today I will discuss about the data communication and data flow in data communication. So if we talk about data flow in data communication, then communication between two devices can be simplex, half duplex, and full duplex. So what is simplex? One-way street. You imagine just one-way street, that is simplex. The communication is unidirectional. The communication is unidirectional. Only one device on a link can transmit, the other can only receive. Only one device on a link can transmit, the other can only receive. Use the entire capacity of the channel to send data. Use the entire capacity of the channel to send data. Example, keyboards, monitors. Whenever we enter any data to our system with the help of keyboard, then it is simplex mode, we can say, of data flow. Here the communication is unidirectional, in one direction only. If some results or some data has been processed and the result has been displayed on its monitor, then that is also unidirectional communication. The entire capacity of the channel is used to send data over here. In the diagram given below, you can see over here, mainframe is the CPU. It is displaying its data on the monitor. Data flow is only in one direction. Direction of the data is shown by the arrow mark. So this is only the simplex data flow. Now if we talk about half duplex means one lane with two directional traffic. One lane with two directional traffic. Each station can both transmit and receive, but not at the same time. Each station can both transmit and receive, but not at the same time. When one device is sending, the others can only receive, and vice versa. Half duplex mode is the data flow in two directions, but the lane or the medium will be only one. The medium will be only one, or the physical path will be only one. Each station can both transmit and receive, but not at the same time. Means what? If one station will send, the others can only receive, and the other station which is on the other side will send. The one device which was sending previously will only receive. Means we can say that एक अगर भेजते हैं तो दूसरा रिसीव करेगा, और दूसरा अगर भेजते हैं तो पहला रिसीव करेगा. तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो सकता है एट ए टाइम. एग्जाम्पल आर वॉकी टॉकीज. वॉकी टॉकीज, यहाँ पे डेटा देखिए, दो स्टेशन है हमारा. डायग्राम में आप देख सकते हैं अच्छे से. हियर इन डायग्राम यू कैन सी दैट एक बार में एक डेटा हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा है, दूसरी बार में दूसरे स्टेशन से हमारा डेटा पहले स्टेशन पे आ रहा है. So direction of data at time 1 and time 2 has been given. This is only half duplex mode. Now full duplex mode. Full duplex mode is two-way street. Both station can transmit and receive at the same time. If we talk about sending and receiving of the data, at the same time both the station will send and receive. Signals going in either direction, sharing the capacity of the link. मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है नीचे में, आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे हमारा एक डेटा पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा है, दूसरा डेटा दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन के पास आ रहा है. मींस शेयरिंग कैन ओकर इन
two ways. Link has two physical separate transmission path. हमारा जो लिंक होता है फिजिकल लिंक उसमें दो फिजिकल सेपरेट पाथ होते हैं, सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ होते हैं। एक जो होगा हमारा डेटा को सेंड करने के लिए और दूसरा डेटा को रिसीव करने के लिए। वन पाथ इज मेंट फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग। The capacity of the channel is divided between signals traveling in both directions. Capacity of the channel is divided between signals traveling in both directions. अगर हम बात करें टेलीफोन नेटवर्क की तो वहां पे हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। इन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वी कैन से दैट जब हम लोग बात करते रहते हैं तो सामने वाला भी आदमी बोल सकता है, मुझे भी सुनाई देगा और मैं भी अगर बोलता हूं तो उनको भी सुनाई देगा। तो ये हमारा होता है फुल डुप्लेक्स मोड, full duplex mode. So these are all about the mode of transmission, or we can say that these are the data flows, that is the simplex, half duplex and full duplex. So now what mode of data flow in the following exhibits shows? These are the exercises you can see and you can have the answer over here. Now we'll come to, or we can move to networks. What is network? A set of devices, nodes connected by communication links. That is your computer, printer, your server. These all things are connected by a set of devices, or we can say nodes connected by communication links. Nodes connected by communication links. This is all about the network. Distributed processing. Most networks use it. Most networks use it. Task is divided among multiple computers instead of one single large computer. Distributed processing means if one large task will be assigned to multiple computer instead of one single large computer. अगर हम बात करें तो एक ही टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ प्रोसेस करेंगे तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहलाएगा। नाउ व्हाट आर द नेटवर्क क्राइटेरिया? नेटवर्क मस्ट मीट अ सर्टेन number of criteria. Most important of the network criterion are performance, reliability and security. कोई भी नेटवर्क हो हमारे पास उसमें ये जो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। दैट इज अवर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस? इन परफॉर्मेंस there is two things available. The first one is transit time, amount of time required for a message to travel from one device to another. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाने में हमारे मैसेज को कितना समय लगता है, या फिर एक मैसेज को ट्रैवल करने से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज ट्रांजिट टाइम। That time is known as transit time. Response time. Response time is elapsed time between an inquiry and a response. Between an inquiry and a response. हमारे response time क्या होता है? एक elapsed time होता है इंक्वायरी और response के बीच में। कितना टाइम में हमारा एक सिस्टम अगर इंक्वायरी करता है दूसरे सिस्टम से तो वो कंप्यूटर कितने देर में रिस्पॉन्स देता है, ये जो ड्यूरेशन होगा इंक्वायरी और रिस्पॉन्स के बीच में, ये हमारा कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। elapsed time between an inquiry and a response. Elapsed time between an inquiry and a response is known as response time. Elapsed time between an inquiry and a response is known as our response time. What about performance? Performance depends on number of users, large number of users, slow response time, types of transmission medium, fiber optic cabling,
faster than other cables. Performance depend on number of users, types of transmission medium, capabilities of the connected hardware, efficiency of the software. अगर हमारा यूजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होगा, स्लो हो जाएगा. ट्रांसमिशन मीडियम अगर अच्छा है, प्रॉपर है, फास्टर है, तो हमारा कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा, मैसेज भी जल्दी डिलीवर होगा. कैपेबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर अगर हम बात करें तो वो स्पीड और कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन दोनों को अफेक्ट करेगा. अगर हमारा हार्डवेयर जो हम यूज कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता जो है अच्छा है, तो वो हमारा स्पीड भी अच्छा होगा ट्रांसमिशन का, और ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ data can be transmitted from that particular hardware. Efficiency of the software, yes, definitely efficiency of software is also mandatory. Process data at the sender and receiver and intermediate affects network performance. And intermediate affects network performance. जो हम डेटा प्रोसेस करते हैं सेंडर और रिसीवर, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस करेगा डेटा को सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो हमारा नेटवर्क के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा. ये तो नेटवर्क परफॉर्मेंस में ये सारी चीजें बहुत मैंडेटरी रोल अदा करते हैं. दैट इज योर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी नेटवर्किंग मैट्रिसेस. दैट इज थ्रूपुट. Throughput is nothing but a measure of how fast we can actually send data through a network. Now the next is delay, that is low. Reliability. Reliability is measured by frequency of failure, recovery time of a network after a failure, network robustness in a catastrophe, protect by good backup network system. अगर हमारा कोई बैकअप सिस्टम है नेटवर्क का और एक अगर फेलियर हो जाता है नेटवर्क सिस्टम, तो दूसरा यूज में आ जाना चाहिए. तो अगर हमारा बैकअप अच्छा है तो मीन्स अगर जब प्रॉब्लम्स भी होता है तो ज्यादा डिले नहीं होता है. रिकवरी टाइम जो है वो लेस होना चाहिए, जो कि नेटवर्क फेलियर के टाइम पे हमारा बहुत जरूरी और मैंडेटरी रूल अदा करता है. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर बहुत कम होना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन रिलायबिलिटी. Security is also the most important part of the network. Protecting data from unauthorized access. Unauthorized access से डेटा को सेव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. Protecting data from damage and development. तो हमारा डेटा डैमेज भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपरली डेवलप्ड होना चाहिए. Implementing policies and procedures for recovery from breaches and data losses, that is recovery plan. Recovery plan should be the best, otherwise your data will not be secured from the breaches or data loss. Physical structures in the network. There are certain types of connections are there, that is network link, point to point, multi-point connections. So these all things are also mandatory in our transferring of data from one location to other location or from one device to another device. So this diagram shows about the point to point connection. Dedicated links will be available between two devices or between two stations. Entire capacity of the link is reserved for transmission between those two devices, means that link capacity or that link efficiency will not be available for any other resources or any other data. Only that two devices will have that link capacity. Use an actual length of wire or cable.
This is the actual length, we can say, which are used in our point-to-point connection between two stations. Other options such as microwave or satellite is also possible for data communication. Example is television remote control, multi-point or multi-drop connection. More than two devices sharing a single link is the multi-point connection. Capacity is shared, channel is shared, either spatially or temporarily. Spatial shared means if devices use link at the same time. Time share means certain times are allocated to that station. Now we will discuss about the types of network, LAN, WAN and MAN in the next lecture, and about what is network and all. So thanks a lot. Have a nice day. Have a great day. So